India, good evening. Thanks for joining us on Times Now. You're watching the News Hour. My name is Pranesh. All of us saw what happened on December 13. Two intruders jumped from the visitors' gallery into the Lok Sabha chamber and set off coloured smoke canisters. The images of intrusion on the day of 21st anniversary of the 2001 Parliament attack sent shockwaves in the entire country, and politics has been raging ever since. Rahul Gandhi today broke his silence on this and said, look, unemployment, joblessness is the reason why this happened. Here is what he said. सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। Rahul is not the first one to have linked Parliament breach incident to unemployment. Sample this. कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए, हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहे हैं। Now, contrast this to the reactions that we got in the first few days after the intrusion of Parliament. This is what leaders said. If you can smuggle in smoke canisters, you can easily smuggle in something far more serious, a bomb, a grenade, a pistol, whatever. The problem is that the security lapses are the issue. All of these were very, very serious concerns. And the problem the MPs have is the feeling that the government is not taking this seriously enough. And accountability has to be fixed. This incident, I was in the house. It could have gone horribly wrong had the intruders had a more lethal substance in their canisters. So let us not minimize the import of the seriousness of the incident there. जो छिपा के ले गए थे वो रंगीन पाउडर थे। अगर डायनामाइट होता या कोई ऐसी चीज होती जिसे ले गए होते, बम ले गए होते, तो क्या होता उस सदन का? और दिन क्या चुना? जिस दिन के लिए धमकी पहले पुन्नू बैठा हुआ आतंकवादी दे रहा है कि हम 13 को हमला करेंगे, सुबह हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो शहीद हुए हैं, और ये सबसे बड़ा फेलियर हो रहा है। उस समय भी भाजपा सरकार थी, इस समय भी भाजपा सरकार है, तो ये तभी सुरक्षा का ब्रीच क्यों होता है जब भाजपा की सरकार होती है। Rahul's comment has given ammunition to the BJP. National spokesperson of the BJP, Shehzad Poonawalla, tore into Rahul Gandhi and Congress party and said Rahul is justifying anarchy. The Congress party today is trying to indulge in this kind of chicanery to come out and justify what has happened inside Parliament on 13th of December. This is the most shameful and ridiculous parallel that could have been drawn. राहुल गांधी, आज सवाल यह बनता है कि इस प्रकार का सुरक्षा कवच आप क्यों दे रहे हैं? Why is Rahul Gandhi giving this kind of suraksha kavach to those who have indulged in this kind of action on 13th of December? Let's open this up. We have with us Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Lokesh Jindal, political analyst, Vivek Srivastava, political analyst, Manoj Yadav, national spokesperson of the Samajwadi Party, also with us. Gentlemen, good evening. Vivek Srivastava, I'll come to you, sir. Yes. But Lokesh Jindal, what do you make of Rahul's logic I think that unemployment is the reason behind what we saw inside Parliament? Yes, sir. Good evening, everybody. Well, these youths who indulged into this activity did not have any criminal history. There is no organization which has claimed responsibility for this act. So it becomes important for us to understand what prompted these individuals, what was the reason for them getting misguided, for choosing the wrong path, for doing what they should not have done.
And one of the major reasons that emerges is that these youths do not have direction. They do not see the way ahead. There's a dark future for them. They are unemployed. Now, the one was 25 years old. A woman was 43-year-old. Now, these are youngsters. They should be more involved into securing a bright future. They must be motivated to study, to develop themselves, to enhance their skills. But Right. So do what we you're see? saying, Lokesh, is that if they had jobs, they won't be doing this. Okay. Vivek, If they had opportunities, opportunities. if they had means, Okay. Opportunities. if they नहीं had थी, a इसीलिए this way happened. ahead. Vivek Srivastava, Absolutely, absolutely. do you want absolutely Vivek Srivastava? You agree with what he's saying? Gee, see. Yeah, why not? I think Rahul ji has raised a very important issue, and what he's saying is absolutely correct. I endorse it. Nobody from the Congress party, or from the left or from the opposition, is saying that what happened was something right. Nobody is justifying an attack on the parliament. Nobody is justifying these people coming into the parliament. However, you have to raise concern that how can the common people, and if a common man starts coming into the parliament to raise the voices, that means the country is going on to the wrong side. For the prime minister, the priority is Gyanavyapi and No, will this, mandirs and Mr. masjids and all Vivek that. Srivastava, But couple for the of common questions. man, 1 minute, you sir, have 1 to know minute. what the priority Will this is. logic of unemployment, joblessness Yeah. be applied on other criminals, people who do crime in society? वो जेब कतरा हो, murderer हो, कुछ और हो, will this apply to them? See, maybe No, I not don't in want to all see, the- I all want the to cases hear. 100%, but you talk to anyone right from a clinical. No, then please listen to me now. You can talk to any common clinical psychologist or a social psychologist or somebody from a good background in human resource management, and they will tell you that 99% of the crimes and the problems are there because of social problem. I'm not talking about terrorists. I'm not talking about jihadis. I'm talking about something different. So majority of these people, if they have their bellies filled, if they People have of a Team motive, if India, they have did a you job, not if they hear have a what running Karti business, Chidambaram if said? they have a What family if and they had guns responsibility, or bombs? They will not. You are reducing it to unemployment. No, that is what Vivek I'm saying. The Srivastava, no, concern one is- minute, sir. What should the the con- rate of unemployment obviously, be? yes. No, 1 minute. Yes. What should the rate of unemployment be for people to pick up guns? I'll tell you, but I'll need 20 seconds for it. Fine. Okay, I'll tell you one thing. A kid came to me and said, sir, please help me out. I want to know how I can become a lawyer. And I called up all the colleges. Indian Institute of Management, Rohtak, a government college, 6.5 lakh fees per annum. अरे विवेक 30 श्रीवास्तव, लाख मैंने में आप आपसे BA, सीधा LLB करा सवाल रहे हैं, पूछा। सरकारी कितना institution. होना चाहिए rate of No, unemployment आप for सुनिए someone सर to पहले। pick up a अब gun? आपको सीधा बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए ना सर सुन लीजिए ना, प्राइवेट स्कूलों की फीस आपको मालूम है ना, आप नोएडा में Shehzad Poonawala of the BJP is responding to you. Shehzad, the charge is that because of the policies of the Modi government, people are frustrated. This was an act of utter frustration. There have been 40 such incidents that have taken place: 1974 3 times, 1984, 1994, 1978, 1990, 2014. So are you saying then that in all these cases, this is proof of the highest unemployment and highest berozgari? In 1974, by the way, the unemployment and the inflation rate was at 34%. So by the way, this is not the logic. And secondly, just now you have heard what Lokesh Jindal said. Lokesh Jindal said Neelam Azad is 43 years old. That means when Manmohan Singh government left, she was 33 years old. If at age of 33 she is not able to find a job, then God help her, who can find her the job? And one of the other person, Sagar, is a 12th fail. What job will you give to a 12th fail? And by the way, these people even defended Afzal Guru. Vivek ji, I did not interrupt you. Vivek, in every show without fail you interrupt me. Is this an agenda? Is this an agenda? You have something against me, why don't you remove it? Every show, 10 seconds you interrupt me. Have the courtesy to let me finish, then you speak. No. Then now let me complete. Pranesh, this has Vivek become Srivastava, please, this sir, has become please. a congenital habit of don't- Vivek on do every not- show. do Let not- me tell do the not- viewers of Times now. do not The disrupt. problem is, Pranesh, that they can't counter me on facts. So all of them unite and they do not allow me to speak more than 10 seconds. Vivek has been doing this every show I'm appearing. don't laugh at unemployed Anyways, people. now let me come on the issue. This is not question of misguided people. This is a question of guided people. Who is guiding these persons? Neelam Azad was demanding votes for Congress. There's a video of that effect.
Neelam Azad is seen with Sudhir Goyal, who is another leader of the Congress party. Lalit Jha is seen in the Trinamool Congress party leaders company and also Congress party leaders company and in the office of the Congress party. And therefore, when this nexus has come out, they are starting to give Suraksha Kavach. And look, one common sign is there. 2001, 13 December, attacker Afzal Guru, JNU जाते हैं राहुल गांधी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है को बचाव करते हैं, और आज जो 2023 में जो हमला करते हैं उनको भी बचाव करने का काम राहुल गांधी करते हैं. मेरा आखिरी सवाल है, you said this is an attack on temple of democracy. Mr. Jindal and Mr. Vivek Srivastava, is this less than a terror act? Is this not a terror act? Allow me to answer. No, Vivek Srivastava, is this not a terror act? Do you still What is think the this is not a reason? terror act? What is the reason? What is the reason? I don't laugh at unemployed people. And Reason? the attack happened. No. because Why the did BJP 26/11 pravakta and the happen? likes of himself Why and did the Osama BJP ram a plane make into fun nine? of No, people who are 1 minute. unemployed. 1 minute. Vivek आप Srivastava, 1 minute. हंस रहे हैं. नहीं, आप हंस रहे एक हैं मिनट. कि What is 43 the unemployed. cause of terrorism? आप बताइए आप सर, मजाक बता बना रहे हैं उन लोगों का जिनके दीजिए. पास बुरहान नौकरी वानी नहीं है. was also hailed as educated youth, The cause of misguided terrorism youth. is frustration. 1 minute. Sir, people of the country can see through this farce. Vivek Srivastava, Lokesh, I'll come to you. Let Vivek Srivastava answer this. No, people of the country should see through it. I'll just take 20 seconds. If Mr. Shehzad Poonawala wants to say that the Congress, the left, the opposition is trying to have a terrorizing agenda and we are trying to motivate people to go and barge into the parliament, God help his mind. Okay, one line. God help his You mind. are. Pranesh, one line. Okay. We have been ruling this country along with you and Vivek ji, other parties said, Vivek for ji, the last 70 years. Vivek ji, you have made your point. Let me make one line. You have said I was insulting unemployed people. Do you know, Vivek ji, the highest unemployment rate in the country was in Kerala at 12.5%. Should they barge into the Kerala Assembly? Can I answer? No, please? one second. Let Vivek answer. Na, Lokesh, आप एक ही alliance वाले हो. The central government is not. अरे आपके स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट बता रहा हूँ. केरला में पिनराई विजयन है, मोदी की सरकार नहीं है वहां पर. होती तो मध्य प्रदेश जैसे 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता. राजस्थान में 20% क्या बताइए. आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं. Sir, one No, second. but you're You not said this is answering the question, frustration Vivek of unemployment. Srivastava. This is the logic. No, this is the logic you are extending. This is the logic you are extending, that if you don't have a job, barge into the assembly, go inside the parliament, attack people, abuse them, insult them. I'll answer Kerala. I'll answer Kerala. I'll answer Kerala. Please do, I'll sir. answer Rajasthan. 2.5 years. The finance bill. No, let me speak. 2.5 years in Kerala. The finance bill was stalled by Arif Mohammad Khan, the governor. Oh, at the great. place of Blame the central governor. government. Okay, And then there tell was the some people to point. barge into One Raj second, Bhavan. One second. Will the people... 5 seconds. Okay. Since he said 2 Yes. years the finance bill was stalled, the unemployment rate 2 years ago was 12.5%. Today it's down. So are you saying Arif Mohammad Khan actually helped? विवेक जी, प्रॉब्लम आपकी यही है. आप छोड़ दीजिए Central इसको. government is not. Lokesh, let's try this with Vivek. Vivek. No, sir. आप चेंज करो, अच्छा, आर्गुमेंट ठीक है. चेंज करो. Change नहीं, कीजिए. 1 minute. You take your time, sir. आप Think it through. बेरोजगारी Vivek बढ़ाएंगे? Srivastava. Look, sir, you If know... education is here- expensive- No, 1 minute, sir. 1 minute. Yes, I am fair. Vivek Srivastava, I'll give you time. You gather your thoughts. आप सोचिए आराम से. I'll come back to you. यहाँ कोई समय की सीमा नहीं. आराम से बात करेंगे. Lokesh, you wanted to answer that question. Isn't it trivializing, something as serious as this by linking it to joblessness? Pranesh, what do we mean by job, profession, and occupation for an individual? It is supposed to provide an individual a social identity, fulfillment of a person's political aspirations, adequate means for living, and an overall, I would say, moral, spiritual, intellectual upliftment. But what is happening today is we are witnessing jobless growth. In every sector, there are graduates every year. Lokesh increasing, Jindal, I'm sorry to say, but the you're sounding like meaningful Sanjay Jha. employment- 1 minute. No. I'm wait sorry, a minute, Lokesh. Wait a minute. Wait a minute. You Allow are me to complete, usually please. on the, mark, Give me the same courtesy as you gave to Shehzad. Just a few seconds Okay. more. I just want to summarize it that you cannot say that there is some problem over here. Everybody's opposing BJP. There is a conspiracy going on. You have to be a bit sympathetic to the society as well. This is not If about the there are youths BJP. getting Lokesh, you are misguided. catching the wrong end of the stick. This is not about No, BJP. It is about national security. 1 minute. Exactly. Let's take Exactly. example This of is Afzal about Guru. national 1 minute, sir. security 1 minute. Where the government No, is 1 minute. failing. Lokesh, 1 minute. Let's Internally talk about as well Afzal as Guru. Who was administratively. he? Did he not have a social standing?
Did he not have qualification? Did he not have a job? That's even more disheartening. Graduates who are basically able to go for a job are not able to No, find was he jobs. misguided by the RSS? No, it's not about RSS or non-RSS. Then every individual it is not ought about, to have you know, a having a He job. just said we should have a They must sympathetic have view about adequate Afzal means Guru. of living. He just said we means should have a by which they sympathetic could view fulfill their on Afzal Guru. One aspirations. second. I mean, that is something which Lokesh is bare Jindal. minimal for an individual to seek Lokesh- for. Lokesh ji. And the state, it is the state's responsibility. Okay, Lokesh It's ji, a one state's second. duty Lokesh ji, to you have just that said- provided to every individual. It also comes under directive principle of state policy. One second. One Okay, second, one okay, second. okay, Let me okay. unpack Okay, this. One second. Let me okay, unpack okay. this. Lokesh Jindal is saying that we must have a sympathetic view towards Afzal Guru. Yaqub Memon was actually a CA. Again, no, sir. Yaqub Memon please was a stop CA. What screaming fulfillment, venom over ideological, here. political, No, no, intellectual, Shehzad, social, मेरी बात सुनो सामाजिc आप। was not being Shehzad, done एक that he मिनट। took to conducting the अगर terror कोई attacks एक in बहुत Mumbai. बढ़िया One second. Lokesh ji, I did not background से interrupt you. उठे हो, Lokesh ji, I कोई did not आपको interrupt हक नहीं you. देता दूसरों Lokesh के ji, I बारे did में not बोलने का। interrupt you. नहीं, Please अगर आप wait your interrupt करें, turn. अभी आप सुनेंगे मेरी Please बात wait को। your turn. No, I will not listen to you. It's my आपको turn to एक speak. अच्छा बचपन No, no, और no. एक अच्छी Pranesh, I have to upliftment मिली है। speak. इसका People मतलब don't get ये to नहीं hear है or कि understand आप the जो point I'm लोग making. जो लोग I will इतने speak, बेहतर but नहीं है, Okay. उन पर you can't have question two करो। voices on. क्या Let's struggle not, देखा है gentlemen, आपने? please. There is enough time Lokesh bhai, for everyone to be Shehzad, courteous and speak let's in not their talk turn. over each other. I Exactly. haven't even brought in Manoj Yadav. So let me speak He's in my turn. listening You to can this speak in your turn, intently. but it's also Yes. 1 versus 3. So Pranesh, I'll just make my point quickly. The point I'm trying to make is Yaqub Memon had a high-paying job. Afzal Guru had a high-paying job. If today we are down to legitimizing terrorism, saying that this is because of joblessness, Osama bin Nobody's Laden was one of the richest legitimizing people in terrorism, Saudi Shehzad Arabia. Punawala. But still he indulged in Nobody's terror. This is a legitimizing mindset terrorism. issue. It's not a job issue. It is not a No. Berozgari issue. It is an issue क्या that I जानते don't हैं want आप ballot, I want बेरोजगारी के bullet. बारे में? And this is the ideology of the left. The left has never believed in democratic means. They have incited people and become Naxals. They have told Naxalism karo, bullet uthao, ballot ko chodo. Okay. And this is the mindset they are Is promoting. this the tukde mindset? Let me get in Manoj Yadav, another reasonable voice, national spokesperson of the Samajwadi Party. Manoj Yadav ji, अरे विवेक भाई 2 मिनट। मनोज यादव जी, जो जिस तरह जब ये घटना हुई उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई आपने भी सुना होगा, आप पैनल पे भी थे। अब लोग कुछ पिछले 3-4 दिनों से बोल रहे हैं कि ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो ये कर बैठे। बिल्कुल सही कहा प्रणेश जी, लेकिन इस बात की चर्चा शहजाद पूनावाला जी को इस डिबेट में करनी चाहिए। वो इधर उधर भागते रहे, मैं लगातार सुन रहा हूं, पता नहीं किन किन आतंकवादियों का नाम लेते रहे। एक रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट होती है वो अपने स्टेट के जो भी पीपल्स हैं, चाहे वो 43 ईयर हो या 33 ईयर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही तो कहना था कि अंतिम व्यक्ति को वो उदयमान होता हुआ देखना चाहते हैं। तो अगर किसी की अंतिम एज तक, मतलब उसकी लास्ट चांस तक अगर उसको मौका वो अपनी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इनको मौका देना चाहिए था उन लोगों को। और आज अगर देश का बेरोजगार अपना प्लेटफॉर्म संसद भवन बना रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मनोज जी आप भी जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बेरोजगार अपना प्लेटफॉर्म संसद भवन पर बना रहा है। मतलब हम किस दिशा में ले जा रहे हैं इसको, कि अगर आपके पास काम नहीं है तो आप संसद भवन में इस तरह से घुस जाइए। मेरी बात पूरी हो जाएगी। अगर उनको रामलीला ग्राउंड में या कहीं पे और जंतर मंतर पे प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी बात कहने का और सरकार की कान तक अपनी बेरोजगारी के आंकड़े दर्शाने का, तो निश्चित तौर पे उन्हें संसद भवन जैसा कोई स्टंट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है हम और आप सभी जिम्मेदार हैं, कोई उनको प्लेटफॉर्म तो आपको लगता है कि जो उन्होंने किया क्योंकि उनको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मनोज जी, मैं बस सीधा सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं समझ गया आपकी बात को, और आप मुझे कहिए कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि उनको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अगर मान भी लें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो क्या यह तरीका है और हम अब हम अपने राजनीति के लिए इसको एनकरेज करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं प्रणेश जी इस तरह के बिल्कुल कृत्यों को बिल्कुल समर्थन नहीं करता। संसद भवन एक बड़ा सेंसिटिव प्लेस है, वहां पे इस तरह किसी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके पास और ऑप्शन थे, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को उनके घर के सामने जाके प्रोटेस्ट करने का उनके पास अधिकार था। लेकिन उन्होंने जिस रास्ते का प्रयोग किया उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। लेकिन
आज परिस्थितियां ऐसी भी आ गई कि कोई मजबूर हो जाए इस तरह करने के लिए, और सरकार वहां पे पता नहीं किन आतंकवादियों का नाम इस डिबेट में ले नहीं, और बोले कि एक बात बताइए मनोज जी, यही महबूबा मुफ्ती, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं मनोज जी, से जोड़ा जाए। मनोज जी, आतंकवादियों से आप कह रहे हैं, आतंकवादियों वाला एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि आपको पता है जो टीम इंडिया के मेंबर हैं पीडीपी एनसी, पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है क्या कहती है कि कश्मीरीज who have this sense of alienation, जिन पे अत्याचार हो रहा है, they were forced to pick up guns. ये तो उसी लॉजिक को एक्सटेंड करना हुआ कि आप बंदूक उठा लो। विवेक श्रीवास्तव को मैंने पूछा कि जॉबलेसनेस का प्रतिशत कितना होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बंदूक उठा ले। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिशत सुन लीजिए, देखिए सब सुनहरा सुनहरा दिखाया जा रहा है, सब गोल्डन गोल्डन है कि 2% आंकड़े रह गए हैं बेरोजगारी के। मध्य प्रदेश में 4%, उत्तर प्रदेश में, और देश में तो कुछ है ही नहीं है बेरोजगारी। तो मनोज जी, ये बेरोजगारी की तो बात ही नहीं है ना, ये तो एक माइंडसेट है। उठा ले, अगर आप एनर्किस्ट माइंडसेट लेके की बात है, माइंडसेट सरकार को माइंडसेट नहीं है, कोई एनार्की नहीं है। सरकार सबसे बड़ी एनार्की है, सबसे बड़ी एनार्की सरकार। तो जो लोगों ने वोट दिया है वो एनार्किस्ट है। सरकार अगर सरकार अपनी एनार्की को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, सरकार बिल्कुल नहीं किसी की बात सुनना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार एनार्की है। अच्छा, सरकार एनार्की है, शहजाद पूनावाला रेस्पॉन्ड टू दैट। अब एक नया तर्क सामने आया है, अब एक नया तर्क सामने आया है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला और सरकार एनार्की है। 1974 में डैगर, पिस्टल, बम लेकर लोग घुसे थे, सरकार एनार्की थी या प्लेटफॉर्म की कमी थी? डिस्कशन 1984 में 2 लोग कूद गए वहां से, मुझे नहीं मालूम है गैलरी से, ये प्लेटफॉर्म की कमी थी। देखिए फिर से बीच में बोल रहे हैं, नहीं बोलने दीजिए। देखिए विवेक श्रीवास्तव, 1 मिनट, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, मनोज जी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, लेट द बीजेपी रिस्पोंड टू दैट। Every statement Vivek Srivastava has taken a swear that he will not let anybody in the house speak and he will not let me speak. No, he will let you speak. But he will not. He has done this on other shows also and he's constantly doing it. He has a job, anyway, yes. At least he has a job. Otherwise, he'll also go to parliament with a canister. Anyways, 1974 में डैगर और पिस्टल लेकर चले गए लोग, तब कौन से प्लेटफॉर्म की कमी थी? तब तो लोकतंत्र का सुंदर गाना चल रहा था ना। 1984 में कोई वहां से कूद गया, 1994 में हुड़दंग मचा रहे थे लोग, 1990s में भी ये घटना हुई, 2014 में भी हुई। तो बता दीजिए कि आपकी सरकारों के तहत ये सारी चीजें हुई तो प्लेटफॉर्म की कमी थी या वहां पर नौकरियों की कमी थी? दूसरी बात, please don't interrupt Vivek. It is difficult to talk. I'll have to lower your fader, Vivek Srivastava, please, sir. When you were talking, he was not interrupting, please. It's just manners Vivek to listen Srivastava. to another person. I don't understand why we can't be courteous and speak in your own turn. I am 1 versus 3 in the panel. Anyways, now secondly, sir, why don't you talk about your government instead of harping about I am talking about my government only, and please, Pranesh, now it is becoming irritating. Let's do beyond the this. point. Okay. Now let me You are complete not my talking next about point. the No, 1 minute, Now 1 let me minute. complete Let's my have next some point. order here, please. Let me complete Shahzad, my I'll have to next take a point. short No, no. break. No, let's take a short break. I'll come back to you. I'll come back to you. Make your point. I'm coming back to you. All our guests stay on. Viewers will be right back. What was the reason, or can there possibly be a reason as a justification for the security breach in Sansad? We have our panelists with us, Shehzad Poonawala, Lokesh Jindal, Vivek Srivastava, Manoj Yadav. Shehzad, you were making a point. देखिए, समाजवादी पार्टी को आतंकी में बेरोजगार दिखे, ये इसमें मुझे कोई हैरानी की बात नहीं महसूस होती। अहमदाबाद ब्लास्ट का मुख्य कॉन्विक्ट का पिता समाजवादी पार्टी में था। जब इंडियन मुजाहिदीन के लोग मैं जवाब दूंगा, उसको डिफेंड करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया। यूपी एटीएस पे सवाल खड़े कर दिए। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 18% बेरोजगारी थी यूपी में जब 2017 में आपकी सरकार गई, आज 2% है। तो जब 18% थे तो क्या असेंबली में घुस जाते? और आखिरी बात, सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूं कि हर बार कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम आतंकवाद को संरक्षण क्यों देता है? लालू प्रसाद यादव एंड मुलायम सिंह यादव हैव डिफेंडेड सिमी व्हेन इट वाज बैंड बाय हू? सुप्रीम कोर्ट, यूजिंग सेम एग्जांपल, सेम आर्गुमेंट कि ये बेरोजगार भटके हुए नौजवान है। हालात का मारा याकूब है। अफजल गुरु जुडिशियल एग्जीक्यूशन में मारा गया। तो आप देख रहे हैं पैटर्न, अफजल गुरु से लेकर सिमी हो, पीएफआई हो, हर आतंकवादी अराजकतावादी को ये सुरक्षा कवच देते हैं। मनोज यादव, हाँ, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। बिल्कुल, अपने देश के नौजवानों के बारे में इस देश के नेताओं को हर बात कहने का अधिकार है।
लेकिन अजहर मसूद को और कंधार तक आतंकवादियों को छोड़ने वाले नाकाम आतंकवादियों को सूटकेस भर भर के पैसा देने वाले सरकार के सामने हमको बिल्कुल इस बात का जवाब देना उचित ही नहीं समझता मैं। और दूसरी बात, ये बेतुकी बातें जो शहजाद पूनावाला टीवी पे कहते हैं, कौन आतंकवादियों को? उन आतंकवादी जिनको आप आतंकवादी कह रहे हैं उनको पास किसने दिया था? बीजेपी के सांसद ने। और बीजेपी के सांसद अगर आतंकवादियों को पास देते हैं तो वो निश्चित तौर पे आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, अगर वो आतंकवादी हैं। और इस देश का कोई भी नौजवान अगर भटकेगा, शहजाद पूनावाला आप सुन लो और नरेंद्र मोदी भी सुन ले, हम उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, पंथ हो चुके। हमें अपने राष्ट्र से, अपने राष्ट्रवासियों से प्रेम है। आपकी तरह हम रेडिकुलस नहीं है, समझ गए? जिस तरह की बातें आप टीवी डिबेट पे 2% और 4% की कहते हो, हकीकत की जन्नत की हकीकत आपको मालूम नहीं क्या है। He wants to respond to you, Manoj. मनोज यादव जी ने कम से कम इनको आतंकी कहा। सुनिए संजय राउत। उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा। आप ही कह रहे हैं कि आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। सुन लीजिए। आप किस आतंकवादी का समर्थन करते हैं? अजहर महसूद का किया था। देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई। अब बताइए, इंडिया अलायंस का एक समर्थक बोलता है कि ये तो आतंकवादी है, दूसरा बोलता है मैं इनको आतंकी नहीं कहूंगा। पहले तय कर लो कि आतंकी मानते हो कि नहीं मानते हो। दूसरी बात सुन लीजिए, इन आतंकियों के बचाव में असीम सरोड़े जो कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे, वो उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो आप उनको बचा क्यों रहे मान्यवर? और यूएपीए का चार्ज लगाया तो विवेक श्रीवास्तव क्यों बोल रहे हैं कि ये तो मासूम है, बेरोजगार है? आप बता दीजिए आतंकवादी है कि नहीं है, आतंकी है कि नहीं, मानते कि नहीं मानते? विवेक जी एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए विवेक जी। नहीं कर रहे। अरे आप कितने लोगों को आतंकवादी बनाओगे? नहीं, आतंकवादी किसी को बना थोड़ी रहे, जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर यूएपीए में प्रोब हो रहा है उसका मतलब ये नहीं कि आतंकवादी है, लेकिन वो तो पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है फैसला लेना। अब कैसे लोग बोल सकते हैं कि जॉबलेसनेस था इसीलिए इन्होंने हमला कर दिया? वो तो ट्रिवियलाइज करना हो गया। मनोज जी देखिए, मनोज जी आपने शुरू एकदम ठीक से किया, आपने बहुत ही प्रिंसिपल स्टैंड लिया, लेकिन उसके बाद से ये डिफेंस तो नहीं हो सकता ना सर की क्योंकि उनको काम नहीं है तो वो ऐसा कर दिया उन्होंने और हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। एक वाक्य हमने नहीं समर्थन किया कि वो ऐसा करें। एक वाक्य नहीं, आपने नहीं किया मनोज जी, आपने नहीं किया। इसी कौन चर्चा करेगा? मैं वही कह रहा हूं, आपने नहीं किया। टीम इंडिया एक ही तो गठबंधन है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए संजय राउत का उन्होंने चलाया, राहुल गांधी कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया और मनोज झा आरजेडी के उन्होंने कहा कि मैं चोर या आप चोर या शहजाद पूनावाला चोर। एक मिनट के, मैं चोर आप चोर या शहजाद पूनावाला चोर, ट्रैक रिकॉर्ड बता देगा ना। बट ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, टोटी चोर का ट्रैक रिकॉर्ड है सामने। नहीं, छोड़ देते इस बात को। नहीं मनोज जी, ये चोरी की बात नहीं है, ये तो चोरी की बात नहीं है, वो तो उसके लिए हमारे पास एक प्रक्रिया। विवेक श्रीवास्तव, एक वाक्य विवेक श्रीवास्तव से, अगर बेरोजगारी के कारण पार्लियामेंट में घुसना जायज है तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ तो क्या क्या नहीं हुआ है वहां पर जिहाद के नाम पर, तो उनके लिए क्या क्या करना जायज है? विवेक श्रीवास्तव, उनको बंदूक उठा लेनी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, अरे आप पहले सुन लीजिए शहजाद भाई, भाई छोड़ दीजिए, आप जवाब दीजिए। रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता एक बड़ी, अरे भाई सुन लो पहले यार, आप पहले जवाब दीजिए ना। कश्मीरी हिंदू क्या क्या उठा ले बताइए पहले। यू आर द रिप्रेजेंट, यू प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट। कश्मीरी हिंदू, अरे भाई मुझे बोलने दीजिए, पर मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलेंगे कि मुझे बोलने दीजिए। लाइन पे ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं, तो आप कृपा करके रेस्पॉन्सिबली बोलिए और हमारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। चलिए अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कश्मीरी हिंदू क्या क्या उठा में जाकर बेरोजगारी नहीं, डाल नहीं सकते, जिंदगी बर्बाद हो गई। 70s में हुआ, 80s में हुआ, 90s में हुआ। I asked him that question, what should the rate of unemployment be for people to pick up guns? राहुल गांधी हो चाहे संजय रावत हो, this is not about individuals, this is about a mindset. किसी भी ऑपोजिशन के विवेक श्रीवास्तव 1 मिनट सर, माइंडसेट सुन लीजिए। हमें आप क्या कहना चाहते हैं? तो टाइम्स नाउ ये कहना चाहता है कि बीजेपी को छोड़ करके सारी ऑपोजिशन पार्टीज टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करती हैं। जी नहीं, ये कह रहा है टाइम्स जी नहीं, टाइम्स नाउ ये नहीं कह रहा विवेक श्रीवास्तव। इंडिविजुअल्स लाइक यू, no 1 minute, इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड द अदर्स एंड दैट पीपल नो हु दे आर। I'll tell you, no 1 minute, विवेक श्रीवास्तव, if you can't take a position on terror, if you can't take a position on terror, you will be called out, Vivek Srivastava. This deflection will not work here, not with me at least.
1 minute. I have I have given you enough opportunities to explain your point. You don't have a point. Vivek Srivastava, you are defending the indefensible. You can't defend something as Don't trivialize. You are trivializing it by linking it to unemployment. But we Vivek said go to the root Srivastava, cause. tomorrow, 1 minute, 8 I minutes. am saying go into Vivek the root cause. Srivastava, Why 1 minute. don't you want to go into Vivek the root cause? Srivastava, What do is you the know root the cause number of unemployment? people who protest in Kerala daily? Then you tell me what 1 is the minute. root cause. Should they open Pranesh fire will at tell me the root no, cause. should they open Pranesh fire at will the tell chief me the minister? root cause. What are you saying, No, no, sir? you tell me What the are root you cause. saying? What is You this tell me the mindset root that if you cause. don't have a If it is platform, not go do unemployment, this? Where will Pranesh you draw the tell me line? What is the Where root will cause you of draw this the line? activity? Vivek Srivastava, where will you Whatever draw the line? happened, what is the Where root will you cause? draw the line? Do Who you will believe tell in me? rule of law? Either Do you you believe tell in me rule or of they law? cannot tell me. Vivek Srivastava, do you believe in rule of law? Obviously I do. You do. Everybody This is does. how you do. Everybody does. This is how you do, and this is how much you do. आपने मुझे cause भी This is बताया. how much you मैंने do. cause बोला There unemployment. are ways मैंने to cause protest बोला legitimately. There आपने are नहीं ways to बताया cause protest क्या है. legitimately. To jump into the Lok Sabha chamber with a spray Nobody is bottle justifying is the way no of way to protest. protest. And Nobody has people, no, 1 justified the minute. way of And protest. people who are Nobody backing has this justified the mindset way of are protest. doing a great disservice No to the opposition country. party has Let me tell justified you. the way of protest. Let's rise above. Let's No, rise above absolutely party not. lines We are tonight. trying to Vivek find out the Srivastava, cause. let's rise above We are party trying to lines find out the tonight cause. and take a principled stand, Vivek Srivastava. If you can't, No, everybody is if you above party can't, line. then We are people will patriotic. teach you a lesson. We have a principled That's all that I want to stand. say. We don't need the Lokesh BJP Jindal, certificate. Lokesh We don't need the Jindal, BJP can we justify this mindset? Well, Pranesh, I would like to appeal to the ruling dispensation as well as the youth via this channel. The youth has got different means to fulfill their aspirations, and the political dispensation must not be in a lot of arrogance and simply target or blame the youths unilaterally. This incident should be seen as an indicator. There is a constructive criticism that has been commented upon by Can I Rahul ask you Gandhi. one He's thing? right. Can I He's ask you right one thing? when he's Lokesh drawing the bhai, attention please, towards can I ask you this? unemployment. If okay, going by this logic, are you saying only 4 people in this country are unhappy? All the others are happy? No, Pranesh. तो फिर ये It's क्या not मतलब about है 4 sir? people. It's not about They 6 should all people. storm into the parliament tomorrow. No. Pradesh, why are we waiting for such a thing to happen? We Who was not. waiting? No, the very fact that there were few individuals who met on the Facebook since 1 year, they That were is a planning matter to of indulge probe, into such a which form is of what I said in activity. the beginning. Let's Since wait for the January, police these to... No, people 1 met. minute. Vivek. No, Pradesh, since January, these people met. Well, the girl was a civil services aspirant. No, the whole it is. it So is if they very met in January, sad to see. so you're conceding that this was well choreographed. Consider ये कोई spur of the moment नहीं था. I am unhappy. Let me go do this. Indulging into such form of an activity. Now come on. What There is is no creating this justification for ground something for like this. We've such run out of ideas time, to breed in? unfortunately, gentlemen. No, Pranesh, Manoj Yadav, Vivek Srivastava, Shehzad Poonawala, Lokesh Jindal, thank you for joining us. Let's all be measured in our commentary and let the police and other probe agencies do their job so that we get to the bottom of this. Who was the mastermind? Who are the people guiding, misguiding them? We will find out soon. Thank